Good afternoon, all. Today we'll start with today we will start with accounting standards. Correct? In previous lecture we concluded with AS 13. I hope you all remember, and we concluded with framework for preparation and presentation of financial statement. So these two chapters we have concluded. दो chapter हो चुके हैं. Correct? Yeah. So now we are going for next one that is very interesting. Basic concept is accounting standard. Main focus of the syllabus itself is accounting standard. So आज standards पे बात करेंगे, detail में बात होगा. Maybe we'll talk about introduction, we'll talk about applicability in today's lecture. Correct? Next lecture onwards I will start with maybe AS1. Start करूँ? लिखते जाने का, साथ में लिखना. सेपरेट बुक में लाया तू अलग बुक ना, दो दो लाया है. वेरी गुड. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Come on, what do you mean by accounting standards? Okay, so first question we will talk about what are accounting standards. क्या होता है accounting standards? Accounting standards are written policy documents. लिखे हुए policy documents हैं. Covering what? Guidelines related to issues in financial reporting. Last lecture में मैंने बात किया था. Correct? So I can say accounting standards are written policy document. लिखे हुए policy documents हैं. Accounting standards are written policy documents covering the guidelines related to issues in financial reporting. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो गाइडलाइंस कवर करते हैं. किससे रिलेटेड गाइडलाइंस? इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने का जो एक सब्जेक्ट है
that is financial reporting. Now our focus will not be only on debit credit. Our focus will be on what? Financial reporting, reporting of financial information. करेक्ट? उसमें क्या क्या इश्यूज आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सब प्रॉब्लम्स के ऊपर गाइडलाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है. करेक्ट? सेकेंड पॉइंट, what issues or aspects are covered in accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या कवर होता है, कौन से इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होते हैं. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये क्या था? RMPD, if you remember. Recognition, measurement, presentation and disclosure. Recognition, measurement, presentation and disclosure. ये चार इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होते हैं. अग्रीड? व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन? How to record, when to record particular transaction or event in the books of accounts. Correct? That guidelines are given by accounting standards. करो नीचे एरो करके लिखो, how and when to record a particular item or event or transaction. They clear? How and when के नीचे underline. How to record and when to record. बोलो depreciation. Let us take one example. Depreciation record करने का कितना मेथड था? दो मेथड, नॉर्मल मेथड, PFD मेथड. So how to record depreciation? When to record? बोलो डेप्री स्टार्ट कभी से होगा? When asset is ready for use. Correct? When an asset is ready for use, on that day we can commence depreciation. I hope you understood this. Correct? ये सब guidelines किसने दिया है? Accounting standards ने. So recognition aspect is covered by accounting standard. Measurement. देखो measurement मतलब at what value? Particular item
or transaction or event will be recognized. Clear? Third, presentation मतलब how to present particular item in the financial statement. Write down how to present such event or transaction in the financial statement. समझा यहाँ तो बोलो. And last, disclosure. The information related to such event or transaction is to be disclosed in notes to accounts. Notes to accounts. हुआ यहाँ पर पक्का. दो पॉइंट क्लियर. क्या था दो? फर्स्ट, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? Written policy documents covering what? Guidelines related to issues in financial reporting. What are the issues in financial reporting? Financial reporting समझाना. It is reporting of financial information to the users of financial statement. Lenders, investors, shareholders, government, ये सब users होते हैं. उसको हम financial information report करते हैं. That is called as financial reporting. ये रिपोर्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? तो RMPD. वो RMPD का गाइडलाइंस किसने इश्यू किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अग्रीड? ओके. Second point clear. Issues related to accounting standards or reporting, RMPD, recognition, measurement, presentation and disclosure. चलो third, why accounting standards required? क्यों चाहिए बोलो standards? What are the benefits of accounting standards? What are the objectives of accounting standards? बोलो. We can say uniformity, standardization or harmonization of financial statements.
और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, करेक्ट। यूनिफॉर्मिटी मतलब जितने भी एंटिटीज रहेंगे, अगर सब एंटिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्म हो जाएंगे। देयर विल बी एन यूनिफॉर्मिटी, देयर विल बी अ स्टैंडर्डाइजेशन इन द फॉर्मेट, standardization in the accounting principles, policy and treatment adopted by the various entities. Agreed? या इसके कारण क्या होगा? हाँ, सेकेंड रीजन कंपैरिजन, फर्स्ट रीजन यूनिफॉर्मिटी होएगा, स्टैंडर्ड्स रहेगा तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा, यूनिफॉर्मिटी होगा। स्टैंडर्डाइजेशन हुआ तो क्या होगा? कंपैरिजन कर पाएंगे। कहाँ कंपैरिजन करने का? किसके साथ? इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म मतलब दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन, इंट्रा फर्म मतलब विद इन द कंपनी विथ प्रीवियस ईयर कंपैरिजन। So inter-firm and intra-firm comparison will become easier if you have standardization and uniformity. बोलो comparison होएगा तो क्या होगा? What you will do after comparison? We can have proper decision making. लैंग्वेज देखो ना अपना कैसा लैंग्वेज निकल रहा है, मालूम है? पेपर में ऐसे सब लिख के आते थे, वी कैन सी ने, वी कैन चेक ने, ये क्या? प्रॉपर इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे हम लोग इफ वी विल हैव प्रॉपर कंपैरिजन एंड देयर इज एन यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो तीन मेजर रीजन है, क्या है तीन? फर्स्ट, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों चाहिए? फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी और हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करते थे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसमें कॉस्ट कैसे फाइंड करते थे? व्हाट आर द कॉस्ट फॉर्मूले? बोल बराबर से। सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, फीफो, लीफो, ये सब AS2 में अलाउड था पहले। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज हो गया, बोलते हैं नो नो नो, वी विल रिड्यूस मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, ओनली फीफो एंड वेटेड एवरेज इज अलाउड, सिंपल एवरेज नॉट अलाउड बिकॉज दैट इज नॉनसेंस। सिंपल एवरेज इज नॉनसेंस, वो सिर्फ आपके 10th के मार्कशीट में अलाउड है, बेस्ट 5। वो भी गया ना अभी, है कि नहीं है? नहीं है। बाकी सिंपल एवरेज नॉनसेंस, लीफो इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल बाई AS2। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के कारण क्या हुआ? पहले बहुत सारे मेथड्स थे कॉस्ट फाइंड करने के, उसमें से थोड़े मेथड निकाल दिए, थोड़े ही मेथड फॉलो कर सकते हैं, इट विल रिड्यूस मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। समझा कि नहीं समझा? या सो तीन रीजन, क्या तीन रीजन है? यूनिफॉर्मिटी, सेकेंड कंपैरिजन एंड थर्ड डिसीजन मेकिंग। करेक्ट? राइट डाउन। फर्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन। स्लैश करके लिखो यूनिफॉर्मिटी, स्लैश करके लिखो हार्मोनाइजेशन। लिखा? बोलो। नेक्स्ट लाइन बुलेट डालो। टू स्टैंडर्डाइज accounting treatment.
procedures, policies, and practices. To reduce or eliminate multiple alternative फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है अभी. What are the objectives of accounting standards? ये attempt, this attempt. Point number 1 clear. Point number 2. लिखो. To improve comparability, consistency, and transparency of financial statement at inter-firm comparison and intra-firm comparison. Inter-firm समझता है ना? Between two companies, two firms, two enterprises. Intra, within the organization with previous year. Decision making for taking economic decision. क्लियर? ये समझा कि नहीं समझा? कितना पॉइंट हो गया?
3 पॉइंट किया. व्हाट इज अकाउंटिंग? ये बायट चाहिए ये सर, आज ही पूछेगा मोनिल, नेक्स्ट लेक्चर में यार. अभी का अभी पूरा बायट चाहिए, पूरा चैप्टर थियरी है तो पूछेगा, मजा आएगा. हाँ तू अकेला ही है, मतलब तेरे को अकेले को पहले पूछेगा ऐसा, फिर बाकी लोग को पूछेगा. नया लोग को नहीं पूछेगा, नया लोग को पूछेगा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, है ना? पूछू ना? हाँ चलो. एनीवे मोनिल बायट चाहिए मेरे को पूरा वर्ड टू वर्ड. क्यों? इतना सिंपल है, इतना तो रिवाइज किया. बहुत इजी है, कुछ नहीं है. कितना पॉइंट्स पढ़ा हम लोग ने? 3. फर्स्ट क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? It is written policy documents covering what? Guidelines related to issues in financial reporting. What are the issues? RMPD. बराबर. R क्या था? N P disclosure. याद रहेगा पक्का. फिर why accounting standards required? For standardization, uniformity or harmonization. फिर second, comparison. Which comparison? Interfirm, intrafirm. And comparison के बाद क्या करेंगे users? Decision making. कितना तो सिंपल है ना? मजा तो अभी आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड accounting standard setting process. Accounting standard setting process. स्टार्ट करें. ये क्या लिखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? तो उसका प्रोसेस क्या है? आईसीआई कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. सुपर. मैं शॉर्ट फॉर्म बोलेगा, तुम फुल फॉर्म बोलने का. करेक्ट. आईसीआई आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल बॉडी. डू यू अग्री विद दिस? वो कैसे बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टैब्लिश करेगा, बरोबर ना? कभी ईयर में 2 बार नया नया बोर्ड बनाएगा ऐसा? कैला ईयर में 2 बार तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट मिल रहा था. ईयर में 2 बार समझा नहीं. 2 बार मीटिंग बुलाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का. आंसर इज नो. मैं बोला आइला इसको कैसे पता रे, कोई मेंबर है क्या? नहीं ना. चलो सुनो इधर. हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड setting process will be conducted by ICEI. They have given in 1-page answer. पूछा नहीं है अब तक एग्जाम में, but we should be aware of. It is given in study mat, so we have to learn this. बहुत सिंपल है, मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में दूंगा, so you can remember it for long period. पहले क्या आएगा बोल? ICEI, correct? It is artificial person, एक बॉडी है. क्या काम करते हैं लोग? सर पेपर सेट करते हैं, पेपर चेक करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं.
करेक्ट, एग्जाम डेट डिक्लेयर करते हैं, ये सब आईसीएआई नहीं करता। आईसीएआई में एक बोर्ड रहता है, वो बोर्ड को बोलते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज, बीओएस। आईसीएआई में वापस बोल रहा हूँ, एक आर्टिफिशियल पर्सन, वो कुछ काम नहीं करता, उसको जो काम करवाना है उसके लिए अलग अलग बोर्ड बना देता है या कमेटी बना देता है। दैट कमिटी और बोर्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ few people of ICAI definitely, and they do that particular work. Accounting standard ICAI फॉर्म करता है, agreed, but ICAI again artificial person है, तो ICAI क्या करता है, एक बोर्ड बनाता है। वो बोर्ड का नाम क्या है, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कभी बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईसीएआई ने ASB 1977 में बनाया, समझ रहा है, 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। ASB क्या करता है, ये बोर्ड क्या करता है, एरिया आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। समझा कि नहीं समझा, कौन फाइन करता है ये एरिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाला, कि ये एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, ये एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, ये कौन फाइन करेगा, एएसबी। अभी ये लोग ने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, करेक्ट, लाइक आई कैन से दैट टैक्स के रिलेटेड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, करेक्ट, AS22 बनाया उसके लिए 2003 में। तो क्या किया रहेगा ये लोग ने, कोई भी स्टैंडर्ड बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द एरिया, इन दिस एरिया वी रिक्वायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर वो एरिया को स्टडी करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं। लाइक में आईसीआई है, मेरे को चाहिए कि 5 एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए, तो ये एरिया नंबर 1 के लिए 4-5 जन का कमेटी रहेगा, स्टडी ग्रुप बोलते हैं उसको, वो एरिया पे वो स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर सेकंड के लिए स्टडी ग्रुप, इसका थर्ड एरिया के लिए एक स्टडी ग्रुप, फोर्थ एरिया के लिए एक स्टडी ग्रुप, they will do detailed study of that particular area and then exposure draft बनाएंगे, स्टडी करेंगे डिटेल में, ड्राफ्ट बनाएंगे, ये ड्राफ्ट सर्कुलेट करेंगे एक्सपर्ट बॉडीज को, एक्सपर्ट लोग को, और उनको बोलेंगे आप कमेंट्स दो, कुछ मॉडिफाई करना है तो हमें बोलो। कमेंट्स आने के बाद मॉडिफाई करने का ज़रूरत रहेगा तो मॉडिफाई करेंगे, फिर फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा, फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए मार्केट में ओपन रखेंगे, फिर पब्लिक को अगर कुछ ओपिनियन देना है तो पब्लिक ओपिनियन देगा, अगर इंस्टीट्यूट को मतलब वो ग्रुप को लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट कंसिडर करने जैसा है तो कंसिडर करेंगे, एंड दे विल मॉडिफाई इट। एंड लास्ट में आईसीएआई इन कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट एंड नफरा NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ICAI in consultation with government and NAFRA will issue accounting standards। गया कि गया, पक्का लिख लो, हेडिंग लिखो जल्दी,
इधर तक पहुंचे सब लोग? आगे बढ़े? Shall I proceed? तीन लिखा, इसके नीचे लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। उसके नीचे लिखो प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट and its circulation। उसके नीचे ascertainment of views of different bodies। Next, finalization of exposure draft for public comment। Clear? Next, comment received and modified if necessary। And now last, ICAI in consultation with government and NAFRA finalize the draft and issues accounting standards। बोलो इधर तक समझा कि नहीं समझा? याद रहेगा ये मोनिक? ये याद रहेगा बेटा? इससे मतलब हाँ ऑफ कोर्स। बोलो क्या था, एक बार रिपीट करो। फर्स्ट आईसीआई, आईसीआई ने क्या फॉर्म किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कभी 1977 में। वो बोर्ड क्या करता है? आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। कि बोलो उसके बाद
उसके बाद क्या करेगा, स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप बनाने के बाद वो स्टडी ग्रुप क्या करेगा, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएगा, बराबर है। हेलो, ड्राफ्ट का क्या करेंगे, व्यूज, एसर्टेनमेंट ऑफ व्यूज फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे, फाइनल ड्राफ्ट बना के पब्लिक कमेंट के लिए ओपन करेंगे। फिर पब्लिक कमेंट मिलेगा, इफ नेसेसरी तो मॉडिफाई करेंगे, नॉट नेसेसरी तो इग्नोर करेंगे। एंड देन इन कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट एंड नफरा, ICAI विल इश्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कैन यू रिमेंबर दिस? क्या था ये बाय द वे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। सच बोलो, समझा क्या? बोलो। नॉर्मली हम इधर तक ही पढ़ाते थे, नॉर्मली मस्त सोए पड़े हो नहीं, हाँ, नॉर्मली हम यहाँ तक ही स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन करवाते थे। बट अभी स्टडी मैट में है ना, दे हैव गिवन समथिंग रिलेटेड टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया है, तो इफ यू वांट देन आई कैन डिस्कस, अदरवाइज वी कैन स्किप दैट, बिकॉज उसके ऊपर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, अब तक आया नहीं है। बट एक क्वेश्चन कार्व इन एंड कार्व आउट करके RTP में दिया हुआ है, तो अगर आपको वो सब सुनना है तो आई कैन डिस्कस, अदरवाइज वी कैन स्किप दैट। बोलो मोक्षी, मेरे से बात करो, क्या है? अरे कुछ तो बोल, तू करने का नहीं करने का? बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, जितना ज्यादा पढ़ाएगा तेरे को उतना बायट करना पड़ेगा, तू फंस जाएगा। चलो सुनो, आई विल गिव यू द, आई कैन से समराइज इन थियरी, नॉट थियरी इन राइटिंग। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन अवर टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक ओपन करने का ज़रूरत नहीं है अभी, तुम सुन लो, सिर्फ पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का, बिकॉज CA फाइनल में वेन एवर यू विल एंटर, you will have global standards, you will have IND AS in your syllabus। पूरा फाइनल का सिलेबस वही है, करेक्ट? अभी मेरे साथ रहना, जोड़े रहो। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सुन लो इधर। ड्यू टू globalization, every country now investing money in other countries. Every country's companies are investing money in other countries' companies. Correct? Now, high level of cross-border inflows, cash inflows are happening nowadays. High level of FDIs and FIIs coming, and our companies are also investing in another countries. So due to high level of globalization, there is a need to have standards, accounting standards and uniformity, not only in one country but at global level. So in G20 summit in 2006-7, our ex-silent Prime Minister had attended that meet. You know silent Prime Minister? Dr. Manmohan Singh. आप तो कैसे हैं, जेन जी वाले लग रहे हो, जेन जी वाले हो ना आप लोग? यू नो जेन जी? नहीं, 2000 के बाद वाले ही हो ना, छोटे छोटे ही हो आप लोग अभी। हाँ, सो जेन जी, तो यू डोंट नो कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मोदी 3 बार आया। करेक्ट? वी हैड साइलेंट प्राइम मिनिस्टर जो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, कोई मीट में भी नहीं बोलते थे। करेक्ट? So in that G20 meet 2006-7, they have decided to go for global accounting standards. Every country will follow same set of accounting standards. Correct? There are two possibilities. There were two possibilities. Either every country should follow US GAAPs,
गैप्स क्या होता है? नहीं सुना है गैप्स? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स। तो यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं, उसका नाम क्या है? यूएस गैप्स। एंड यूके के स्टैंडर्ड्स हैं, यूके के, उसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। So every country in G20 summit, they have concluded that we will go for इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब यूके बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब लोग फॉलो करेंगे, नॉट यूएस बेस्ड। करेक्ट? या सो फाइनली सुनना अच्छे से, यूके बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर कंट्री ने फॉलो करने का एक्सेप्ट किया। नाउ यूके बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाए? तो देयर वाज अ लंदन बेस्ड ग्रुप, वो ग्रुप का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। कभी बनाई ये कमिटी? 1973 में। अपना बोर्ड कभी बना? 4 साल के बाद वी रियलाइज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए हमने बोर्ड बनाया। ये लोग ने क्या बनाया? कमेटी। अभी ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने क्या इश्यू किए? क्या इश्यू किए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करेक्ट? उसके बाद ये कमेटी 2001 के बाद क्या बन गया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और जो जो एरिया पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे, या जो एरिया पे नए बनाने थे, उसके लिए ये आईएसबी ने क्या इशू किया? आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो आई कैन से आज के डेट में बहुत सारे आईएएस अभी भी हैं, और जो एरियाज पे आईएएस नहीं थे या आउटडेटेड हो गए थे, वो एरिया पे वो लोग नया स्टैंडर्ड लेके आए। उसको क्या नाम दिया? एंड दी स्टैंडर्ड्स आर, इधर तक समझा? पक्का? फिर 2007 में every country had decided to become IFRS compliant. See, whenever word IFRS is used, it is including IAS. It is including what? IAS. IAS full form? International Accounting Standard. IFRS, International Financial Reporting Standards. करेक्ट? अभी हमने 2007 में डिसाइड किया कि हम आईएफआरएस कंप्लायंट होंगे। बहुत सारा कंट्रीज ने डिसाइड किया वी विल बी आईएफआरएस कंप्लायंट, मतलब हम हमारे कंट्री में आईएफआरएस लेके आएंगे। आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बड़ा बड़ा नाम है, बाकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। करेक्ट? नाउ हाउ टू बिकम आईएफआरएस कंप्लायंट? तो दो मेथड था उसका। मेथड 1 था अडॉप्शन, मतलब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस है उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लो, या फिर कन्वर्जन्स।
उसको एज इट इज अडॉप्ट मत करो, उसको आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करो और फिर अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाओ, तो यू विल बिकम IFRS कंप्लायंट। उसको बोलते हैं कन्वर्जन्स। नाउ व्हाट इंडिया हैड डन, इंडिया हैड नॉट adopted IFRS as it is. Our country is innovative country. We have converged IAS or IFRS and we made our own standard which is known as INDEX. INDEX full form Indian Accounting Standards. ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किधर से बने? IAS एंड IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से हमने क्या बनाया? इंड एस। गया कि गया? आंसर दो। अभी ये इंड अभी ओके, ये IFRS एंड IAS जो थे ना, उसमें नंबरिंग सेम थे। मतलब IAS 1 2 3 4 5 6 करके 41 तक है और IFRS 1 2 3 4 करके 15 तक, 16 अभी 16 हुआ है, 16 तक है। अभी हमने तो IFRS एंड IAS दोनों ले लिए और हमने हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए। हेलो, तो अभी हम इन डेज बना रहे हैं, तो IAS 1 भी है एंड IFRS 1 भी है। नंबरिंग कैसे दी? दोनों अलग अलग है। तो हमने क्या किया, जो IAS वाले हैं उसका नंबरिंग सेम रखा, IAS 1 इन डेज 1, IAS 2 इन डेज 2। इन डेज 2 क्या है मालूम है? इन्वेंट्रीज। अपना एस तो क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तुमको समझ रहा है? और जो ये नंबरिंग सेम किसके रखे हमने? और जो IFRS के नंबर्स थे ना, उसमें हमने 100 ऐड कर दिया। तो अभी इन डेज कितने हैं? तो 1 to 41, उसमें थोड़े थोड़े बीच के नहीं है, बट सीरीज 1 to 41 एंड 101 to 116। अभी कोई पूछेगा व्हाट इज 100 एंड इन डेज 102, तो 102 कहां से आया? IFRS से आया। 102 इज शेयर बेस्ड पेमेंट, इस आपका। तुमको कुछ समझता है क्या बात करता है? पक्का नंबरिंग समझा गया? अभी ये पूरा सिलेबस है ना इंडेस, आपका CA फाइनल सिलेबस है, करेक्ट? अभी मुझे सोच समझ के आंसर देना। इंडिया ने IFRS एंड IAS अडॉप्ट किया कि कन्वर्जेंस किया? कन्वर्जेंस किया, उसका मतलब एज इट इज उठाया कि कुछ मॉडिफाई किया? एज पर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री वी हैव मॉडिफाइड। डू यू अग्री विद दिस? हाँ, भी मॉडिफाई किया मतलब क्या किया? तो जो जो प्रोविजन हमें इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते उसको हमने निकाल दिया। उसको बोलते हैं कार्व आउट। कार्व आउट मतलब हम उससे बाहर निकल गए, उसको निकाल दिया। एंड जो जो एडिशनल प्रोविजन जो इन IAS एंड IFRS में नहीं है और मेरे को इंडेस में डालना पड़ा, दैट एडिशनल प्रोविजन इज कॉल्ड एज कार्व इन। ये समझा कि नहीं समझा? आंसर दो। पक्का? ये बैकग्राउंड है किसका? अभी इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल स्टैंडर्ड पे 5-6 पेज का सब यही सब लिख के दिया है जो मैंने अब तक बोला, मैंने समरी बोल दिया। तो कैसा है? अभी बुक बनाया तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार,
कुछ तो ये लोग को बताना तो चाहिए, बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, इंटरव्यू में जाएगा और वो पूछेगा, तो थोड़ा बहुत पता रहेगा तो तुम यू कैन स्पीक। और यू नेवर नो, 4 मार्क का शॉर्ट नोट पूछ रहे हैं, वो 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर कुछ भी पूछ लेंगे। व्हाट इज कार्व इन, कार्व आउट, व्हाट इज इन डेज, तो यू कैन नॉट से ना सिलेबस में नहीं है, स्टैंड मटेरियल में दिया है। तो अभी कोई पूछेगा व्हाट इज इन डेज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन स्पीक। क्लियर? चलो एक बार रिपीट करते हैं, करेक्ट। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बाय द वे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में व्हाट वी हैव अडॉप्टेड, यूके बेस्ड के यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड स्टैंडर्ड्स, करेक्ट। यूके बेस्ड स्टैंडर्ड्स को नाम क्या दिया वो लोग, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और IFRS। डू यू अग्री विद दिस? पहले क्या बना, IAS किसने बनाया, स्टैंडर्ड कमिटी, कमिटी कभी फॉर्म हुआ था 73 में, IASC बना, IASC ने IAS इश्यू किए, फिर 2001 में क्या बना, 2001 में IASB बोर्ड बना, बोर्ड ने क्या इश्यू किया, IFRS, करेक्ट। तो IASC ने IAS दिया, IASB ने IFRS दिया, ये दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, इंडेक्स। अडॉप्ट किया कि कन्वर्ज किया, कन्वर्ज किया। डू यू अग्री विद दिस? पक्का? कन्वर्ज किया तो एज इट इज ले लिया कि थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा बहुत प्रोविजन निकाल दिया, उसको क्या बोलेंगे, कार्व आउट, और थोड़ा बहुत एडिशनल डाला, कार्व इन। अभी एज अ स्टूडेंट यू शुड नो दिस, इसलिए मैंने क्या किया मालूम है, इधर एक पेज का थियरी डाल दिया आपको, ग्लोबल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो एटलीस्ट ये पढ़ेगा ना एक पेज, तो यू विल कम टू नो हाउ टू प्रोसीड। पढ़ो। ओके, बाय द वे ग्लोबल, एक सेकेंड, ग्लोबल स्टैंडर्ड का सिग्निफिकेंस मतलब क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है? इंटरनेशनल लिस्टिंग करना है ना, तो सबको यूनिफॉर्मिटी चाहिए ग्लोबल लेवल पे। रिलायंस को अगर यूएस में लिस्टिंग करना है या यूके में लिस्टिंग करना है, तो रिलायंस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर बन रहा है वो थोड़ा ग्लोबल स्टैंडर्ड के पैरिटी में रहेगा, तो लिस्टिंग विल बिकम इजियर, नो। हमें FIIs एंड FDIs इनवाइट करना है कंट्री में, हाउ टू डू दैट? तो उसके लिए देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जो बैलेंस शीट यहाँ पे पढ़ते हो इंटर में, उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऊपर है एंड एसेट्स नीचे है। जो CA फाइनल का बैलेंस शीट है, इन डेस वाला बैलेंस शीट, उस उल्टा है, ऊपर एसेट्स है, नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। इंटरनेशनली वो होता है। अभी तुम इंटरव्यू में जाएगा, इंटरव्यू के बाद आर्टिकलशिप में जाएगा, वो ऑडिट पे भेज देंगे और कंपनी का ऑडिट देखेंगे, तो सर ये तो बैलेंस शीट ही उल्टा है, हम तो ये पढ़ के ही नहीं आए। हाँ तो बेटा वो फाइनल में है, क्योंकि इन डेज फाइनल में है। सो देर आर सम चेंजेस, इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी एट ग्लोबल लेवल इज रिक्वायर्ड नाउ, एंड फॉर दैट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। समझा कि नहीं समझा? चलो पढ़ते हैं। आर यू इंटरेस्टेड? कम ऑन। क्या लिखा है ये, क्या लिखा, द लंडन बेस्ड नेमली responsible for which was established in, correct, it is presently known as IASC, comprises what, over including, पूरे इंटरनेशनल बोर्ड है तो उसमें सारे कंट्रीज के रहेंगे ना अकाउंटिंग बॉडीज। द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय टिल आर नोन एज, and standards issued by IASB since 1/4/2001 are known as
समझा कि नहीं समझा? Becoming IFRS compliant. How to become IFRS compliant? Any country can become IFRS compliant either by or by third. What are Ind AS? क्या होता है Ind AS? Ind AS are, पढ़ो, IFRS converged standards issued by, under the supervision of and control of ICAI and in consultation with, समझा? NAFRA recommends what? These standards to MCA. MCA has to spell out the accounting standards applicable for companies in India. MCA सुना है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं है वो, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन भी नहीं है. इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो गाइडलाइंस देते हैं किसके रिलेटेड? कंपनी से रिलेटेड. कंपनी का गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देते हैं. Ind AS are named and numbered in the same way as the corresponding IAS. However, for Ind AS corresponding to IFRS, one need to add, come on, what? To IFRS numbers. For example, IFRS 1 is Ind AS 101. ये मैंने आपको बताया. Do you agree? क्या लिखा है? कार्व इन कार्व आउट क्या होता है? दिस कार्व इन कार्व आउट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? डिफरेंस इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट. पढ़ो, सर्टन हैव बीन मेड कंसिडरिंग व्हाट? ऑफ द कंट्री विच इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्रिज्यूम टू बी इन द एग्जिस्टेंस बाय IFRS. मतलब जो यूके का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसका और हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग अलग है. करेक्ट? दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन इंडिया. These differences, which are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS, are commonly known as what? An additional guidance given in Ind AS over and above what is given in IFRS is called as what? Carve in. बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर बैकग्राउंड? ठीक है. अभी दिस इज द एंड ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन. समझा कि नहीं समझा? वी विल स्टार्ट विथ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. चलो, पहले इंट्रोडक्शन पूरा याद रह गया मोनिक? हाँ, फैन बंद करो. बोलो, पूरा याद करना आएगा अभी? क्या ट्राई करो, पूरा इंट्रोडक्शन बैठ. ये फर्स्ट है ना तेरे लिए? ये फर्स्ट है क्या? ठीक है, चलो. एनीवेज, आई होप यू रिमेंबर व्हाट वी हैड डन. करेक्ट? इंट्रोडक्शन बायट है, इंट्रोडक्शन बायट है. हाँ, एक बार रिवाइज कर लो. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट, कवरिंग व्हाट? Guidelines related to issues in financial reporting. What are the issues? RMPD, correct? Recognition, measurement, presentation and disclosure. याद रहेगा?
थर्ड, व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड? तीन रीजन, स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी और हार्मोनाइजेशन, एंड देन नेक्स्ट कंपैरिजन, एंड लास्ट वन डिसीजन मेकिंग. याद रहेगा पक्का? देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, कुछ स्टेप्स थे. आईसीआई क्या करता है? एएसबी बनाता है. एएसबी क्या करता है? आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड. उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, एक स्टडी ग्रुप बनाता है. वो स्टडी ग्रुप क्या करता है? स्टडी करके ड्राफ्ट बनाता है, मतलब रफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है. करेक्ट. फिर सर्कुलेट करता है किसको? डिफरेंट बॉडीज को एंड एक्सपर्ट्स को, एंड देन इट इज ओपन फॉर कमेंट्स. करेक्ट. उसके हिसाब से फाइनल ड्राफ्ट बनता है, फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट, एंड पब्लिक ओपिनियन के लिए, पब्लिक कमेंट के लिए ओपन करते हैं. देन पब्लिक कमेंट्स रिसीव्ड, इफ रिक्वायर्ड इट विल बी मॉडिफाइड, एंड देन आईसीआई इन कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट एंड नफरा विल इश्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. डू यू अग्री विथ दिस? नफरा फुल फॉर्म क्या था? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज. याद रहेगा पक्का? एंड फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बात किया. आई होप यू अंडरस्टूड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. करेक्ट. इट इज यूएस बेस्ड और यूके बेस्ड? यूके बेस्ड. लंदन बेस्ड ग्रुप का नाम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी. कमिटी कभी बना? 73 में. उसने कौन से स्टैंडर्ड इश्यू किए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. 2001 के बाद उसका नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. बोर्ड ने क्या इश्यू किया? आईएफआरएस. और आईएफआरएस कंप्लाइंट अगर कोई कंट्री को बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आइदर अडॉप्शन और कन्वर्जेंस. इंडिया ने क्या किया? कन्वर्जेंस किया. इसलिए क्या बना अपना? इंडेस. नंबरिंग कैसे है? आईएएस से स्टैंडर्ड लिया है तो क्या 1 2 3 4 सेम नंबर. करेक्ट. एंड इंडे सॉरी आईएफआरएस से लिया है तो 101 102 एंड सो ऑन. कार्व आउट क्या होता है? ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, कार्व इन मतलब some additional areas over and above which is there in IFRS have been put in that is called as carve in. करेक्ट. कार्व आउट क्या होता है? जो एरिया नहीं चाहिए था आईएफआरएस का वो निकाल दिया, उसको बोलते हैं कार्व आउट. मैनेजेबल. चलो आगे बढ़ते हैं. राइट डाउन. हाँ, बंद होता ही नहीं है बेटा. बंद क्यों करने का? 24 पे रखते हैं बस. फैन बंद. धीरे धीरे फैन बंद करवाया. अभी एसी. अरे इधर कूलिंग नहीं आता है. फिर हम लोग बोलते हैं ना तो हम लोग को एनर्जी लगता है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अभी ध्यान देना. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. बिग डिस्कशन. We will require around minimum 1 hour to conclude this. Correct? ये इंट्रोडक्शन का अभी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज हैं वो आप देख लेना. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड. चेक कर लो. फर्स्ट क्या था? व्हाट आर द इश्यूज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सेकंड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव. कर पाएंगे? थर्ड. अभी ये थर्ड एंड फोर्थ कभी एग्जाम में नहीं आया. थर्ड क्या लिखा है? इंडेस कैसे बना उसका बात करने का है. एंड फोर्थ, वाई आईएफआरएस को ग्लोबल स्टैंडर्ड माना गया. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. एंड लास्ट, व्हाट इज कार्व इन कार्व आउट. ये सब मैंने आपको प्रिंट करके दिया है. थियरी में भी दिया है. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस एंड क्वेश्चंस भी है. अभी ये पूरे चैप्टर में देखेंगे तो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो 1 2 एंड 5. 3 एंड 4 कैसा है? स्टडी मैट में दिया था तो मैंने डाला है. बाकी उस पर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन एट सी एंटर लेवल. क्लियर. एमसीक्यूज आप चेक कर लेना. आंसर्स दिए हुए हैं. स्टार्ट करूं मैं. एप्लीकेबिलिटी पे बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. लिखो. AS are applicable
AS are applicable? To all business entities. किसको एप्लीकेबल है? ऑल बिजनेस एंटिटीज. आगे लिखो, एएस आर नॉट एप्लीकेबल. टू प्योर charitable institutions. Pure charitable institutions. ब्रैकेट में which are not involved in any commercial, industrial and business activities. समझा यहाँ तक? पक्का? ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको एप्लीकेबल है? ऑल बिजनेस एंटिटीज. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो प्योर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जो सिर्फ चैरिटी का एक्टिविटी करते हैं, उसको स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है. बट अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व इन एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, तो उसको ये एप्लीकेबल हो जाएगा. ये क्लियर? Business entities. There are two types of business entities. Corporate entities and non-corporate entities. Corporate entities मतलब corporate entities मतलब sorry, I can say limited companies. Corporate entities are companies, correct? उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. Small and medium companies, that is SMC, and non-SMC, that is big companies. You can say big or large.
SMC, नॉन SMC। यहाँ तक क्लियर? ये SMC एंड नॉन SMC को कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, इसका क्राइटेरिया किसने दिया है? किसने दिया है? MC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। Ministry of Corporate Affairs have given guidelines related to SMC and non-SMC। कंपनीज के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो MCA गाइडलाइन देता है। नॉन कॉर्पोरेट के स्टैंडर्ड्स का गाइडलाइन किसने दिया है? समझा क्या? बाइट करो, पूछेगा, मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को, पास करवा के छोड़ेगा, बार बार कौन पढ़ेगा तेरे को? समझा? बाइट कर। ICAI, अभी मेरे को बोलो, आंसर दो, दोनों में से एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड होता है? ICAI वाला, मतलब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को कौन से स्टैंडर्ड लगेंगे, उससे रिलेटेड डिस्कशन विल बी वाइटल एज फार एज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न। अभी लेवल 1 एंटिटी का क्राइटेरिया किसने डिफाइन किया है? ICAI। लेवल 1 एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी और बिग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, इसको क्या बोलेंगे? मीडियम, फिर क्या बोलेंगे? स्मॉल, एंड लास्ट माइक्रो एंटिटी। अब बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, लेवल 1 है, 2 है कि 3 है कि 4 है? लेवल 1 एंटिटीज को all accounting standards are applicable। लेवल 1 एंटिटी को all accounting standards are applicable। लेवल 2 एंटिटीज को some accounting standards are applicable। कितने स्टैंडर्ड्स हैं अभी? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आलमन बरोबर चल रहा है, तो अब याद रहता है, सिर्फ नाटक करता है उधर की, तू और तेरे बाजू वाला भी आज किया है नाटक। लार्ज कंपनी और लार्ज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। मीडियम लेवल 2 वाले को सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। स्मॉल वाले को फ्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। एंड लेवल 4 वाले को वेरी फ्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल।
इन अदर वर्ड्स लेवल 1 एंटिटी को देर इज नो रिलैक्सेशन और एग्जाम्पशन पॉसिबल. इसको एग्जाम्पशन एंड रिलैक्सेशन नहीं रहेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड एग्जाम्पशन? रिस्ट्रिक्शन का लेवल कम होता है. लेवल 1 एंटिटी को देर इज नो रिलैक्सेशन, नो एग्जाम्पशन. मतलब ओके ऐसे बोलते हैं, लेवल 4 एंटिटी विल हैव मैक्सिमम रिलैक्सेशन एंड एग्जाम्पशन. यस मैम. Yeah, I understood. Then what is the exemption? I can say out of 27 accounting standards, in few accounting standards, level 4 entity will get relaxation. मतलब few paragraphs are not applicable to that entity. उसको बोलते हैं relaxation from that paragraph, that provision. Accounting standard में sections नहीं होते. सुन लेना फिर तेरे को याद नहीं आएगा. सेकेंड ऑफ जैन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या नहीं होते हैं? सेक्शंस नहीं होते, पैराग्राफ्स होते हैं. एंड पैराग्राफ नंबर्स होते हैं 1 2 एंड सो ऑन. हर स्टैंडर्ड में 40-50 पैराग्राफ्स होते हैं. यू कैन नॉट रिमेंबर पैराग्राफ नंबर. प्रोविजन तो बाय करना पड़ेगा, प्रोविजन तो बाय करना पड़ेगा, बट पैराग्राफ नंबर बाय नहीं कर पाएंगे. But there are few specific paragraphs. उसके numbers हम बाहर चलेंगे. Like AS 11 para 46A we have to remember. AS 18 में para 3A 3B 3C 3D 3E we have to remember. AS 16 में para 4E we have to remember. लेक्चर बैठेगा तो ये सब समझेगा. बैठ के इधर आंसर भी देंगे, फिर बैठने को नहीं. Correct? Yeah. So level 1 entity, all standards are applicable. Level 2, few relaxation and exemptions. Level 3, more relaxation, more exemptions. Level 4, maximum relaxation, maximum exemption. You clear? Relaxation means few paragraphs are not applicable to particular entity. Exemptions means पूरा standard is not applicable to that entity. Clear? पक्का? चलो डन. ये हो गया अपना मेन क्राइटेरिया. अभी लेट अस टॉक अबाउट कि ये लेवल 1 एंटिटी में कौन कौन मीन्स क्या क्राइटेरिया हैं फॉर लेवल 1 एंटिटी. करेक्ट. फिर लेवल 2 का बात करेंगे, लेवल 3, लेवल 4. इसके कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं, वी विल टॉक राइट डाउन. इसके ऊपर लिखना है तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लिख दो. करेक्ट. लिखो. लेवल 1 के लिए 5 क्राइटेरिया दिए. 5 में से एक भी ट्रिगर हुआ देन इट इज लेवल 1 एंटिटी. लेवल 1 मतलब बड़े एंटिटीज. क्या होगा? ओके. लेवल 1 एंटिटीज
मतलब बड़े एंटिटीज ऑल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, करेक्ट। देखो फर्स्ट ये बायट चाहिए मेरे को, ये अभी का अभी बायट चाहिए, मैं पूछेगा नहीं आया ना तो घर पे जाने का या फिर लिख के आने का 10 बार। हाँ लिखो नंबर 1, द एंटिटी whose turnover, the entity whose turnover in previous year is more than 250 crores. ये कभी डिसाइड होगा कि हम लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब बिगिनिंग ऑफ पर्टिकुलर ईयर आई विल डिसाइड कि हम कौन हम, फिर पूरा साल अकॉर्डिंगली हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हाउ कैन आई कम टू नो कि मेरा टर्नओवर कितना है? तो लास्ट ईयर का टर्नओवर बेस लेने का। फर्स्ट ईयर है, देन यू इट इज अप टू यू, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न स्टैंडर्ड्स बहुत लिमिटेड ही फॉलो करते हैं, करेक्ट। या फर्स्ट ईयर है, कांट हेल्प इट इफ यू आर लाइक कि हमको बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, एंड ये फर्स्ट ईयर है इसलिए सेकेंड थर्ड फोर्थ क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ता है, सिर्फ टर्नओवर नहीं। क्या एंड यू हैव टू एंटिसिपेट एट द एंड कि तुम कौन से कैटेगरी में नॉर्मल रहे हो। सेकेंड और है, और फर्स्ट के बाद देयर आर 5 पॉइंट्स, 5 में से एक भी ट्रिगर हुआ तो यू आर लेवल 1 एंटिटी, करेक्ट। टर्नओवर मतलब टोटल रेवेन्यू नहीं, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, एक्सक्लूडिंग लिख दो उधर ब्रैकेट में, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। मतलब टर्नओवर मतलब ओनली सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये सब टर्नओवर में नहीं आएगा। So don't say incomes. If we are a financial enterprise, then financial enterprise के लिए interest is revenue from operation. Then interest will be considered. Then it is not other income. Then it is main income. तो टर्नओवर में इंटरेस्ट लेंगे, करेक्ट। यहां तक हुआ। और वो जो आप बोल रहे हो ना वो आपका थर्ड पॉइंट में कवर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आ जाओ, द एंटिटी whose borrowings, the entity whose borrowings are more than, कितना बोलो, सुन लो, सब 20% है। पहला कितना था, अभी सब 20-20 आएगा। इसका 20% कितना, 50 करोड़। देखो मोर देन 50 करोड़, याद रखना, दैट इज द हिंट। फिर कैसा याद नहीं रहता है ना बहुत जन को, नाटक करे चुप। 50 करोड़ लिखा, 1 मिनट। ये बोरोइंग्स मतलब लोन्स, इट इज इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, बराबर। कभी का लोन देखने का, प्रीवियस ईयर का, बिगिनिंग में डिसाइड होगा ना कौन से लेवल में हम, प्रीवियस ईयर का। अभी 1 मिनट, पूरे साल का लोन आउटस्टैंडिंग देखने का कि कोई भी एक दिन 50 करोड़ के ऊपर गया तो चलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो। पूरा साल मेरे पास है ना 60 करोड़ का लोन था, 30 मार्च को मैंने पे कर दिया, तो अभी जीरो लोन। चेक कभी का करूँ,
क्लोजिंग का चेक करने का कि मैं लेवल 1 है कि लेवल 2 है, कि ये लोन में एक भी दिन 50 करोड़ के ऊपर लोन गया तो लेवल 1। बिकॉज टर्नओवर तो पूरे साल का रहेगा, टर्नओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज टू बी फॉर एंटायर ईयर। बोरोइंग्स पूरे साल का लेने का कि कोई भी दिन, एक भी दिन अगर 50 करोड़ के ऊपर गया तो क्राइटेरिया ट्रिगर हो गया। पहले तो प्रीवियस ईयर का लेना है, इसमें कोई डाउट? एनी डे इन प्रीवियस ईयर के एंटायर प्रीवियस ईयर कि ईयर एंड देखने का, क्लोजिंग चेक करने का। Means I can say any day in previous year if I will cross borrowings of 50 crores, then we can say we are level 1 entity. No, at the end we have to check. तो लूप होल हो जाएगा, बरोबर बोल रहे हो। entire year I will keep 60 crore loan, 30th March I will repay, and 1st April again I will take. टर्नओवर सेल होता है, पूरे साल का लिया जाता है, बट बैलेंस शीट आइटम्स कोई भी एक दिन ट्रिगर हो गया तो वी कैन से हाँ ये ट्रिगर हो गया। बैलेंस शीट आइटम है ना, लोन बोरोइंग्स बैलेंस शीट आइटम है, कोई भी एक दिन ट्रिगर होता है, देन वी कैन से या इट इज ट्रिगर। टर्नओवर इज नॉट बैलेंस शीट आइटम, इट इज फॉर द ईयर। क्लियर? क्या लिखा बोलो सेकेंड? द एंटिटी which has borrowings for more than 50 crores in previous year. दो क्राइटेरिया क्लियर? क्या था फर्स्ट? टर्नओवर फॉर मोर देन 250 crores। टर्नओवर में क्या नहीं लेने का? अदर इनकम नहीं लेने का, करेक्ट। फिर बोरोइंग्स आर मोर देन 50 crores। नंबर 3, the entity which is banks, which is bank or financial institution or insurance नंबर 4 समझाइए। the entity which is listed or in the process of listing either in India or outside India. Correct? Last point. Point number 5, holding or subsidiary of the above. Of the above मतलब जो भी एंटिटी है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है,
वो तो लेवल 1 में ही आएगा, उसके होल्डिंग एंड सब्सिडियरी भी लेवल 1 में आएगा। कोई भी एंटिटी है जिसका बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है वो लेवल 1 में आएगा, उसके होल्डिंग या सब्सिडियरी भी लेवल 1 में। कोई बैंक है तो लेवल 1 में आएगा, उसके होल्डिंग सब्सिडियरी भी लेवल 1 में आएगा। ऑल नॉन कॉरपोरेट बैंक्स, कॉरपोरेट बैंक्स कॉरपोरेट एंटिटीज में जाएंगे, नॉन कॉरपोरेट में आएंगे कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक नॉन कॉरपोरेट करें। यहाँ तक क्लियर? पक्का? लेवल 1 समझा, 1 समझा तो 2 हो गया, 2 3 4 तीनों हो गया एज सच। ये सब क्राइटेरिया किसने दिया है? लिखो लेवल 2 एंटिटीज। The entity whose turnover during the previous year is, बोलो, तो फिर थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ तो आएगा ही नहीं, 20% वापस लिखो। मोर देन टर्नओवर, क्या लिखा आपने? उस टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़ बट अप टू 250 करोड़। टर्नओवर में अदर इनकम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बोलो फर्स्ट क्लियर एवरीबॉडी? सेकेंड, हाँ और डेफिनेटली सेकेंड, द एंटिटी whose borrowings any day in the previous year is बोलो more than 10 crores but up to 50 crores। समझा? ये भी इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। हाँ, थर्ड, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑफ द अबव, holding and subsidiary of the above। डन एवरीबॉडी? बोलो, 3 क्राइटेरिया था, हो गया। लेवल 3, लेवल 3 एंटिटी। देखो, the entity whose turnover during the previous year is more than, बोलो 20%, सब पूरा 2020 पे ही है। मोर देन 10 करोड़ अप टू 50 करोड़।
more than 10 crores up to 50 crores. Or second, the entity whose borrowings on any day in the previous year. Any day in the previous year is more than 2 crores but up to 10 crores. Clear? Okay. And last, or holding and subsidiary of the above. Third one, holding or subsidiary of the above. Level 3 का clear everybody? Level 4. लेवल 4 को ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? रेसिड्यूअल. रेसिड्यूअल मतलब जो लेवल 1 to 3 में नहीं आएगा वो सारे एंटिटीज लेवल 4 में आएंगे. करेक्ट? राइट डाउन. रेसिड्यूअरी भी बोलते हैं, रेसिड्यूअल भी बोलते हैं, बाकी के मतलब. राइट डाउन. द एंटिटीज which are not covered in level 1, 2 or 3 are covered under level 4. क्लियर? लेवल 4 का भी क्राइटेरिया लिख लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक आंसर में इसका क्राइटेरिया दिया है. स्टैंडर्ड में क्या बोला है कि रेसिड्यूअल, जो बाकी किधर नहीं आएगा वो इधर आएगा. लिख लो द एंटिटीज इन. एक मिनट, आपने जो स्टेटमेंट लिखा ना उसके बाद लिखो और उसमें नंबर 1, द एंटिटीज whose turnover is up to, बोलो, 10 crore. सब आएंगे ना बेटा. 2 to 10 क्यों? फिर 0 to 2 किधर जाएगा? लेवल 5. It has to be up to 10 crores. और the entities whose borrowings are up to 2 crores. समझा? Third, holding and subsidiary of the above.
एक्चुअली ये तो लिखने का भी जरूरत नहीं। बोलो, क्राइटेरिया याद रहेगा? यस। ओके, गुड वन। ओके, मैं बताता हूँ, सुनो इधर। ओए छोकरी सुन, क्या बोली वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, द क्वेश्चन इज कि सर, if and any entity's holding company is categorized as level 1 entity and that entity is in level 4, correct? That is your question. So sir, like X limited is level 1 entity and X limited का subsidiary Y limited is level 4 entity, तो फिर कहाँ पे लेने का? तो ऑब्वियसली लेवल 1 एंटिटी में दोनों आएंगे। X limited तो as per the criteria it will fit, and if you read last criteria of level 1 entity, then holding and subsidiary of the above, तो X limited अगर लेवल 1 में है तो उसका सब्सिडियरी Y लिमिटेड भी लेवल 1 में ही आएगा। देन वी शुड नॉट चेक ओनली कि Y लिमिटेड कौन से कैटेगरी में है, करेक्ट? ओके, और भी बेटर क्वेश्चन। सर, इफ वन एंटिटी इज देयर इन लेवल 2 एंड उसका होल्डिंग कंपनी लेवल 3 में है, तो both will come under level 2. In other words, more restrictions we have to provide. लेवल 4 वाले को तो कुछ है ही नहीं, रिलैक्सेशन है फुल। So upper category should be considered for holding and subsidiary. Understood? Okay, wait, you understood the question? Done. Next. Chalo. This is the end of non-corporate entities. लेवल 1 2 3 4 याद रहेगा? अभी कॉर्पोरेट एंटिटीज, इसका क्राइटेरिया किसने दिया? कभी दिया पता है? लॉकडाउन के बाद 2021 में आया उसका गाइडलाइंस। एमसीए ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं एंड एमसीए ने क्या डिफाइन किया मालूम है? एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के क्राइटेरिया दिए, करेक्ट? फिर नॉन एसएमसी को बोला अदर देन एसएमसी इज नॉन एसएमसी। फेयर इनफ? या ओके, वेट। अभी एसएमसी के लिए क्या क्राइटेरिया दिए, स्मॉल के लिए क्या क्राइटेरिया दिए, छोटे कंपनीज के लिए? तो जो ये लेवल 1 है ना, लेवल वन क्या है? लार्ज एंटरप्राइज, बड़े एंटरप्राइज, नॉन कॉर्पोरेट बड़े एंटरप्राइज। तो एमसीए ने क्या किया मालूम है? ये जो बड़े एंटरप्राइज है ना, उसको जो एप्लीकेबल है ना, उसका सब इधर अपोजिट डाल दिया। एसएमसी मतलब छोटे कंपनीज, लेवल 1 मतलब बड़े एंटिटीज। तो आईसीआई ने ऑलरेडी लेवल 1 डिफाइन किया था विद सम क्राइटेरिया, एमसीए ने उसको नेगेटिव डाल दिया एसएमसी के लिए। अग्रीड? पक्का? मतलब लेवल 1 एंड एसएमसी आर अपोजिट एंड लेवल 1 एंड नॉन एसएमसी आर सेम। क्योंकि नॉन एसएमसी को कैसे डिफाइन किया फिर? अदर देन एसएमसी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो तुम कुछ नहीं बोले तो मैं हाँ समझू, बिकॉज सी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी क्राइटेरिया एज सच लेवल 1 बाय ऐड करता है ना, तो सब हो जाता है। वही तो बोला मैंने, क्योंकि बेटा वो कॉर्पोरेट्स हैं, ये नॉन कॉर्पोरेट्स हैं। इसका क्राइटेरिया आईसीए ने दिया है, इसका क्राइटेरिया कॉर्पोरेट एमसीए ने दिया है, और ये नॉन एसएमसी जो है ना, उसको इंड एस लगेगा, इसको एएस लगेगा। क्राइटेरिया सेम दिए हैं, क्या अप्लाई करना है वो तो अलग कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। नहीं तो फिर ये सब कंपनीज इधर कवर हो गए, सबको एएस लगेगा, तो इंड एस किसको लगेगा फिर? ये सब नॉन एसएमसी को इंड एस लगने वाला है।
करेक्ट। एनीवे चलो यहाँ तक क्लियर। हाँ, अभी एसएमसी का क्राइटेरिया बोलो क्या रहेगा। लेवल 1 का नेगेटिव है, बोलो लेवल 1 क्या था फर्स्ट, बोलो लेवल 1 क्या था, टर्नओवर इज मोर देन 250 करोड़। इधर बोलने का द कंपनी व्हिच टर्नओवर इज अप टू 250 करोड़, ऑब्वियसली बराबर है। और वी कैन से नॉट मोर देन 250 करोड़, सब जगह नॉट डालना। सेकेंड, borrowings are not more than 50 crore. Third, which is neither banks nor financial institutions nor इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो वो नॉन एसएमसी बड़े हो जाएंगे, समझा। द कंपनी विच इज नाइदर लिस्टेड नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, बस ये क्राइटेरिया है। लास्ट क्या है, ये ऊपर वाले का होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, वो सब नॉन, वो सब एसएमसी में आएंगे। सच बोलो, समझा क्या, लिख दो। नंबर 1, a company whose turnover the company whose turnover is more than, sorry, not more than 250 crores, not more than 250 crores। फिर एंड, अभी और नहीं, एंड द कंपनी whose borrowings are not more than, बोलो 50 crores। थर्ड, the company which is neither bank nor financial institutions nor insurance companies। Next line, and next, fourth, the company which is neither listed nor in the process of listing in India or outside India। ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो क्या बोलेंगे हम, ये एसएमसी हो जाएगा, चारों फुलफिल हुआ तो। करेक्ट। नेक्स्ट लाइन, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑफ द अबव।
holding and subsidiary of the above. ये हुआ एसएमसी, समझा? ये नॉन एसएमसी में लिखो द कंपनी which is other than SMC. ब्रैकेट में लिखो सेम क्राइटेरिया एज लेवल 1 एंटिटीज. Same criteria as level 1 entities. समझा कि नहीं समझा? Everybody clear? पक्का? That's it. क्या कंप्लीट किया? एप्लीकेबिलिटी इज ओवर. अभी एप्लीकेबिलिटी में है ना, ये देखो मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में प्रिंट करके दिया है, बट मैंने वहाँ पे आपको प्रॉपरली राइटिंग में दिया, क्योंकि इसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे तो जो मैंने लिखवाया वो लिखना पड़ेगा. अभी इसके है ना हाफ एन आवर में अपने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. अभी बेटा आज ही ना, अभी क्या 2:30 हुआ? क्या बोला बेटा? दैट्स इट एज फार एज थियरी इज कंसर्न. छोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं. एक बात समझ लो, सीए इंटर में हो ना बेटा, लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और टाइम पे कंप्लीट करेंगे. करेक्ट? इफ यू हैव इंटेंशन एंड इंक्लिनेशन टू स्टडी तो ही तुम इंटर में आएंगे. आई होप यू हैव दैट इंक्लिनेशन. करेक्ट? या बिकॉज यहाँ पे क्या मैं टाइम पास तो करवा नहीं रहा. अपने को जो भी कंटेंट है, इट इज़ वेरी हैवी कंटेंट, वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. इफ यू आर इंटरेस्टेड, दैट इज व्हाई यू आर कमिंग. या सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स. कम टू क्वेश्चन नंबर 1. डोंट एक्सपेक्ट एनी डिस्काउंट एंड कंसेशंस. नॉट पॉसिबल. यू कांट क्रेडिट योर P&L. क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा पॉसिबिलिटी है होमवर्क कर लो, जाते हैं घर पे. कर लेगा ना तो आज ही करवाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1. बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया फॉर रेटिंग्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, categorize the following as level 1, level 2, level 3 and level 4 entities for the purpose of compliance of accounting standard in India. It was given in RTP May 2024. A to F. There are 6 questions given. We need to identify it is which level entity. Rama Textile, whose turnover excluding क्या लिखा? Exceeds 10 crores but does not exceed rupees 50 crore in the immediate preceding accounting year. बोलो. लेवल फर्स्ट का लेवल क्या था? मोर देन 250, देन 50 to 250, देन 10 to 50. तो ये लेवल 3 में आएगा. स्टार इंडस्ट्रीज इज हैविंग व्हाट? इंक्लूडिंग in excess of 2 crores but not in excess of at any time during the immediately preceding year. Which level? बोलो. देखो बोरोइंग्स का क्या था? मोर देन 50, फिर 10 to 50, फिर 2 to 10. सो ये 2 to 10 ही है ना बेटा. सो इट विल बी लेवल 3. सोचना पड़ेगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा. फीलिंग से आंसर देगा तो फीलिंग से वापस भी बुलाते. थिंक अबाउट इट. न्यूमैन इंडस्ट्रीज हैविंग बोरोइंग्स इंक्लूडिंग व्हाट? पब्लिक डिपॉजिट्स लेस देन 50 lakhs at any time during the year. 4. SS Finance is a financial institution.
कैरिंग इट्स बिजनेस इन इंडिया सिंस लास्ट 10 years? क्यों? वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. डीडी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी ऑफ एसएस फाइनेंस, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑफ द अबव, बोला है ना. रिलायबल कोऑपरेटिव बैंक, अ कोऑपरेटिव बैंक कैरिंग बिजनेस सिंस 15 years. Why one? Banks. बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? ये दिस कैन कम इन द एग्जाम. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सॉरी. हाँ, बेटा ये सारे एंटिटीज नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज हैं. ये रिलायबल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं. कॉरपोरेट एंड नॉन कॉरपोरेट नहीं होते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑलवेज नॉन कॉरपोरेट. कोऑपरेटिव बैंक सुना है कभी? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इधर ही तू जाता है ना पटेल चौक से, कभी कभी चल के जाता है क्या है? हाँ, तो उधर मिलता है, देख, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक. इट इज नॉट कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट. कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑलवेज नॉन कॉरपोरेट. करें? इट इज कोऑपरेटिव बैंक. एक्सिस बैंक, इट इज नॉट कोऑपरेटिव बैंक, इट इज अ लिमिटेड कंपनी. तो वो कॉरपोरेट बैंक हुआ. आईसीआईसीआई बैंक लिस्टेड है, लिमिटेड कंपनी, कॉरपोरेट बैंक हुआ. सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, जो छोटे छोटे लोन्स देते हैं लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होते हैं ये. श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. कोऑपरेटिव बैंक इज डिफरेंट एंड कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट इज डिफरेंट. दे आर ऑलवेज नॉन कॉर्पोरेट. करेक्ट? डन? क्लियर? क्वेश्चन वन में कोई डाउट? इंटरेस्ट है ना? क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नहीं पड़ेगा तुम लोग. रीड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट.